Assalamualaikum. I am Akhtar Ali from HSM Shiny Academy Kora, Physics class ninth. Today we discuss Physics class ninth. Importance of Physics in Science and Technology and Society. This is lecture 2 in ninth class. Uh, Physics contribute to the technological infrastructure and provide trained personnel needed to take advantage of scientific advance and discoveries. Physics is an important element in education of chemists, engineers, computer scientists, as well as practitioners of the other physical and biomedical sciences. So physics जी असांजी सोसाइटी में इम्पोर्टेंट छा आहे त फिजिक्स असांखे हिकिड़ा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ॿुधाए थी ऐं साइंटिफिक एडवांसमेंट ॿुधाए थी जीअं असांजा केमिस्ट आहिनि इंजीनियर्स आहिनि कंप्यूटर साइंटिस्ट आहिनि उहे फिजिकल क्वांटिटी जी हेल्प सां न्यू डिस्कवरीज करे सघनि था Uh, Physics is an exciting and intellectual adventure that inspires young people and expound the frontiers of our knowledge about nature. Physics generates fundamental knowledge needed for future technological advance that will contribute to drive economic engines of the world. Physics improve our quality of life by providing basic understanding necessary for developing new instruments and techniques for medical applications such as computer tomography, resonance imaging, positrons emission tomography, ultrasonic imaging, laser surgery. Means जेका बि असांजी न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट थियनि थियूं इलेक्ट्रिकल जे लिहाज़ सां मैग्नेटिक लिहाज़ सां कंप्यूटर जे लिहाज़ सां मेडिकल जे लिहाज़ सां these are all possible due to physics. So physics has great importance in our society. We can say in shortly, physics has great importance for us. Uh, so physical quantities छा थींदी आहिनि जेकॾहिं असां physical quantities जे बारे में ॻाल्हायूं त physical quantities छा आहिनि physical quantities are simply quantity is a property of material or system that can be quantified by measurements means which can be measured उन्हनि खे असां physical quantities चवंदा आहियूं. A physical quantity can be expressed as a value which is an algebraic multiplication of numeric values and a unit of measurement. माना physical quantity हिकु अहिड़ो value आहे जेको हिकु algebraic multiplication of numeric values आहे ऐं उहो unit of measurement लाइ उनजो proper unit हुजे उनखे असां physical quantity चवंदा आहियूं. जीअं हिकु असांजो example लिखियलु आहे 70 किलोमीटर पर आवर. So 70 kilometer per hour, this is a physical quantity. It has a magnitude that is 70, numeric values that is 70, multiple of numeric values are kilometers per hour, it's a unit. SI unit is used in scientific work. Scientific work में असां SI units use कंदा आहियूं. Physical quantities खे divide कियो वियो आहे ॿिनि types में are classified into two types. हिकिड़ा base quantities हूंदा आहिनि ॿिया derived quantities हूंदा आहिनि. Base quantities छो कहिड़ी हूंदियूं आहिनि? Those quantities which have their own units for measurements are called base quantities. And derived quantities खे असां कीअं मिसाल define कंदा आहियूं त those quantities whose units are derived from the base quantities. हाणे base quantities जेकॾहिं असां example वठूं त base quantity is like a bricks, the basic building blocks of the house. जीअं असांजो हिकिड़ी bricks जेका हूंदी आहे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हूंदा आहिनि हाउस जो माना सिरूं गॾु करे हाउस ठहंदो आहे त बेस क्वांटिटी सिरूं आहिनि उहे सही आहे ड्राइव क्वांटिटी छा आहिनि ड्राइव क्वांटिटी जो मिसाल वठूं इज़ लाइक ए हाउस दैट वाज बिल्ट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स माना कलेक्शन ऑफ बेस क्वांटिटीज़ जा जेका क्वांटिटीज़ ठहंदी आहे उनखे असां ड्राइव क्वांटिटीज़ चवंदा आहियूं जीअं कलेक्शन ऑफ हाउस जेको आहे कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स सां ठहंदो आहे सही आहे मल्टीपल ब्रिक्स पाण में मिली करे हिकिड़ो हाउस ठाहींदियूं आहिनि यानी बेस क्वांटिटीज़ मिली करे हाउस ठाहींदियूं आहिनि त उहा असांजी ड्राइव क्वांटिटी थी वई. Further, physical quantities के साथ ये define करना है the base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed. जंहिं जे basis ते ॿियनि quantities खे बि असां express करे सघूं या quantities that are expressed in term of base quantities are called drive quantities. माना drive quantity उहे आहिनि जेके base quantities जी basis ते असां define कयूं उन्हनि खे असां drive quantities चवंदा आहियूं. So असांजे SI system of units में base quantities खे 7 आहिनि असांजो 7 base quantities आहिनि SI unit for base quantities. SI unit means International System of Units आहे हाणे उहे बेस क्वांटिटीज़ असांजी कहिड़ियूं आहिनि जंहिंजा बेसिक पंहिंजा यूनिट्स आहिनि उहे इहे आहिनि लेंथ मॉस टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. हाणे लेंथ जो यूनिट आहे असांजो मीटर हुनखे सिंपल एम सां डिनोट कंदा आहियूं मास जो यूनिट आहे किलोग्राम हुनखे के सां किलो केजी सां डिनोट कंदा आहियूं
टाइम जो यूनिट आहे सेकेंड, हुनखे एस सां डिनोट कंदा आहियूं। इलेक्ट्रिक करंट जो यूनिट आहे एम्पेयर, जेके ए सां डिनोट कंदा आहियूं। टेम्परेचर जंहिंजो यूनिट आहे केल्विन, हुनखे के सां डिनोट कंदा आहियूं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जंहिंजो यूनिट आहे मोल, जेके MOL सां डिनोट कंदा आहियूं। So these are seven base quantities, जेके तव्हां बेस क्वांटिटी, दे हैव देयर ओन यूनिट्स, यानी कि पंहिंजा यूनिट्स आहिनि। उन खां अलावा असांजो सम ड्राइव यूनिट्स, माना सम ड्राइव क्वांटिटीज़ दे हैव ड्राइव यूनिट्स। ऐं ड्राइव क्वांटिटीज़ सिंपल कहिड़ियूं आहिनि, जीअं एरिया आहे, हाणे इन जो माना इक्वलेंट यूनिट छा आहे, स्क्वायर मीटर, माना M स्क्वायर, यानी कि मीटर जो स्क्वायर। मीटर वाज द बेस क्वांटिटी ऑफ लेंथ, त मीटर स्क्वायर इज द ड्राइव यूनिट ऑफ एरिया। वरी जीअं असांजो वॉल्यूम आहे, त हिन जो मीटर क्यूब आहे, क्यूबिक मीटर आहे। स्पीड वेलोसिटी आहे, हिन जो मीटर पर सेकेंड आहे। एक्सलरेशन आहे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आहे। डेंसिटी आहे, किलोग्राम मीटर पर क्यूब आहे। अमाउंट कंसंट्रेशन आहे, यानी मोल पर क्यूब आहे। फोर्स आहे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आहे, जंहिंखे न्यूटन चवंदा आहियूं। वर्क या एनर्जी, हिन जो आहे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आहे, जंहिंखे जूल चवंदा आहियूं। पावर आहे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, जंहिंखे वाट चवंदा आहियूं। प्रेशर आहे, जंहिंजो यूनिट पास्कल आहे, जेको किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर हूंदो आहे। ऐं फ्रीक्वेंसी आहे, जेको 1/5 सेकेंड्स हूंदो आहे, जंहिंखे फ्रीक्वेंट यूनिट्स हर्ट्स आहे। So these are all derived quantities. माने their units are derived from the base equivalent units, यानी जिन बेस मां असांजा यूनिट्स ड्राइव किया विया आहिनि। ठीकु आहे। ऐसा यूनिट्स वर्कआउट ऑफ द ड्राइव क्वांटिटीज़ फॉर, जीअं असांजी इक्वेशन्स आहिनि, माना इन्हनि कीअं ठहनि था असां यूनिट्स। जीअं स्पीड आहे, त हुनजो स्पीड बराबरि हूंदी आहे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। हाणे डिस्टेंस जो यूनिट असांखे ख़बर आहे मीटर आहे, ऐं टाइम यूनिट सेकेंड आहे। त इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, यूनिट ऑफ स्पीड जेको थी वेंदो आहे, उहो हूंदो आहे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ईअं असां एक्सलरेशन खे ॾिसूं, त हुनजी इक्वेशन थींदी आहे वेलोसिटी पर टाइम। वेलोसिटी पर टाइम, हाणे वेलोसिटी यूनिट हो मीटर पर सेकेंड, ऐं अगेन टाइम आहे मानो सेकेंड। त यूनिट ऑफ एक्सलरेशन जेको थींदो आहे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी वेंदो आहे। जीअं असांजो फोर्स आहे, त मास इंटू एक्सलरेशन आहे। जेकॾहिं हुनजी यूनिट ऑफ फोर्स में ॾिसूं, त मास माना यूनिट किलोग्राम आहे, एक्सलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आहे। त इक्वेशन ऑफ फोर्स जेका थींदी आहे, उहा थींदी आहे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सां थी वेंदी आहे। थैंक्स, फर्दर विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट सेक्शन।